ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இப்போ 48வது தசகத்திலேருந்து படிக்கலான் இருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. முதாசுரௌகை ஸ்வமுதார சம்மதைஹி உதீர்ய தாமோதர இத்யபிஷ்டுதः மிருதூதர ஸ்வைரமுலூகலேலகன்ன தூரதோத்வௌ ககுபாவுதைக்ஷதாஹாம் कुबेरसूनुर्नलकूबराभिदः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेशसेवादिगतश्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायत् बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैक प्रवनो निरैक्षत भिया प्रिया लोकमुपातवाससौ पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्तुपशान्ति सिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखं युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्यात्तपदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहां कतौ रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्र्युकं तथाविधं समेयुषा मन्दरगामिना त्वया तिरायितोलु कलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिषागिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महाद्विषायक्षयुकेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्दभवनापि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ रणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरुतारणतारुणारव प्रकम्पि सम्पातिनि कोपमण्डले विलज्जित त्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिणन्तेन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्ये कतोपतार्पको हरे प्रभावादपरिक्षतो तु न इति ब्रुवाणैर्कवितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात्. ओम श्री हरये नमः. दशकं 49. भवत्प्रभावा विदुराहि कोपाः तरुप्रपातातिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पादकनं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः तत्रोपनन्दाभिधकोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोन्यं वृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय कौष्ठीनमथक्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयाना नुगता विचेलुः अणो मणो यद्वनिधेनुपालीखुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदापिताक्षराणि प्रपीयनान्यायतमार्गदैख्यं निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्द प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदधाशाद्बलसान्द्रलक्ष्म्या हरिर्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितपर्यगलोकथास्वम् अरालमार्गागतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्वम् मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमाला शबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षथास्वं समं ततो गोपकुमारकैस्वं समं ततो यत्र वनान्तमागाः
ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकां तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् सरामोऽथ कुमारकैस्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्। ॐ श्रीहरये नमः। दशकम् 50। तरलमधुकृद्वृन्दे बृन्दावनेत मनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसको देव श्रीमन्विचेरितधारयन् धवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्ता रान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वाट्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धम् आन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमथ चरणे बिभ्रत् बिभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपित क्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजवक्षुण्ण क्षोणीरुह क्षतकानने दिवि परिमलबृन्दाः वृन्दारखा कुसुमोर्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमां मूर्धन् यूध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तः बालैः सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपे नोध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिखरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितहृदं प्रेक्षां मासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरकृच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपौ राते भवन्तमभिधृतः सकिलनिखिलनग्नि प्रख्यं पुनर्धृतमुदवमन् तलयितु मगात्रोट्याः कोट्या तदा शुभवान् विभो खलजनभिधा शुञ्चुः चञ्चु प्रगृह्य ददारतं सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमघ अव्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वां शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनोगणे किरति सुमनो वृन्दं वृन्दावनाद्गृहमय्यताः ललितमुरलीनादं दूराणि शम्यवधूजनैः त्वरितमुपगमारात् आरूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दा नन्दः समीरनमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान्। ॐ श्रीहरये नमः।
दशकं 51। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमथिप्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमधीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयपुलकधरैः कलेबरैः उतूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्य विरलशाद्बले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सबदिशयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिप प्रसारितप्रतितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारका किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्व तत्तनौ पशुपकुले सवत्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुं गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमात्तमास्थितं महासुरप्रभव महो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले न ऋतुरतो जगुस्सुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुधृतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषी स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजितत्रिदशगणैर्मुदानुतः शुकाशनन् विहतव गोपमण्डले मकाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम्। ओं श्री हरये नमः। दशकं 52। अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदागमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनास परोक्षभावं निन्येत वत्स गगनान् प्रवितत्य मायां वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु कामैव दातृमतानुवर्ती त्वं स्वामि भुक्तकवलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोधितसरोजभवकुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययात त्वामेव शिक्यगवलादिमयं दधानः भूयस्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि किञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतिं वनिता च गावः एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभार निःशेष कोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान्
दृष्ट्वा विवेकमशुने द्रिहिणे विमूढे प्रादीतृषप्रतिनवान् मकुटाङ्गदाती भूषां चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलिततृषः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोहयावदेको बभूवि तथा कवलाथपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुर्स्वां नत्वा च नूतवति धातरिदामया ते उदैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात्। ओं श्री हरिये नमः। दशकं 53। अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौकण्ठवयो मनोन्यम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेव तीनः तदेव देवारभतास्तदायत् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालताली निवहे त्वदुक्त्या बलेन दूतेत बलेन देभ्यां मृदुकरचाव्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धेनुकपालनेऽहं कथं वदं दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजिगनत्स्वं तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वे नोपाकटानग्रजसंयुतस्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तः तालेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नति त्वय्यत जम्बुकौघं स नामकत्वात् वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यथितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमत्येति सुरैनुतस्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासी बालैः समं तालफलान्यभुक्ताः मधुत्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेधो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैः च तृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागा खलु बालकैः स्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यतद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभूत्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्। ओं श्री हरये நமஹ। இன்னைக்கு 53வது தசகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். 48வது தசகத்திலேருந்து 53வது தசகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.